We will come to the word shortly, and we have somebody who's extremely calm in our midst. There might be storms in his heart, in his mind, in his thoughts, but when you look at him, he's very calm, he's chilled out. Okay. You know, I've been, we spent a lot of time together in the previous company that I worked. Within me, I have a reactor. You know, sometimes the reactor can be seen outside also, but he also has a reactor, but you can't see it outside. Yeah, let's welcome Kevin. और केविन का स्वागत करेंगे और बच्चे जो है वो किड्स क्लब में जा सकते हैं. Thank you, Ryan. You know, it's such a privilege to be part of City Hope Church. You know, a church founded on the Word of God. I'm blessed. My family is blessed. My in-laws are blessed to be here. And my hope and prayer is that every member of your family who is not here will soon join this place with you. All right. The title of my message today is "What Goes Around Comes Around." Let's pray. Father God, I thank you for giving me this opportunity to speak your heart to your people, Lord. I pray, Lord, for clarity of thought and speech, that I may bring this message the way you want me to bring it, Lord. And I pray for all these people listening to this message, Lord, that they will understand it better than I'm preaching it. In Jesus' name, amen, amen, amen. What goes around comes around. जो होता है वो वापस से आके फिर से होता है. You know, I chose this title not just because it is relevant to my message today, but also because I'm mindful of what God is doing in our midst in this season. Have you noticed what God is doing in our midst in this season? I'll give you one small example. मैं एक उदाहरण आपको दूंगा. 3 weeks ago, we invited Auntie Reena to our place in Talasari. I say, we are members of City Hope Church. The promise over us is this house will demonstrate His power. She came to our house. She got healed of major afflictions, knee pain, back pain. और आंटी रीना जब हमारे साथ आई तो उन्हें काफ़ी चंगाई मिली. She was so overwhelmed by the healing that she came to church here and just to testify about what God has done in her life. और इतना अद्भुत बदलाव लगा उन्हें उस चंगाई से कि वो कलीसिया में आई गवाही देने के लिए. And then she prayed and 2 of her own people got healed. What goes around comes around. जो होता है वही बात फिर से वापस होती है. When we open our doors to be a blessing to others, we also get blessed. जब हम आशीष का दरवाज़ा हमारे हृदय का खोलते हैं हमें भी वो आशीष वापस मिलता है. And it is such a God move. You know, you could see that this is such a God move because the people who got healed, they did not get healed of cold and cough. They got healed of major like spinal injuries. Like when we open our doors for God to do what He can do in our lives, what goes around definitely comes around. Actually, up until 2-3 days ago, I was not sure the title should be because this time Ryan told me don't speak from a topic but speak from a chapter. And a chapter has so many different things, right? But in that same conversation, he said, you can try the book of Philippians. The minute he said, try the book of Philippians, I knew this was a spirit-led move. Because the book of Philippians, especially chapter 4, is one of my favorite chapters in the Bible. You can ask anybody in my family, which is Kevin's favorite chapter in the Bible. They'll say Philippians 4. और आप मेरे परिवार में किसी को भी पूछेंगे कि पूरे शास्त्र में मेरा पसंदीदा अध्याय क्या है वो कहेंगे कि फिलिपियों 4. You know why it's my favorite chapter in the Bible? क्या आपको पता है कि ये मेरा पसंदीदा अध्याय क्यों है? Not because of any verse or because of the message in that chapter, but because I received this chapter directly from above before I even touched this book. It was the year 2008. I had just come to the Lord, and just for formally that I was an atheist, not believing in God at all. And so when I came to the Lord I could see God moving in my life. My mind was bursting with so many questions, and every night I would fast and pray and say, God, speak to me, give me a word. Never occurred to me once also to pick up this book and read. तब मुझे एक बार भी ये नहीं समझ में आया कि मुझे शास्त्र उठाकर पढ़ना चाहिए. Anybody like that, you are asking God to speak to you and you're not bothering to pick up this book? क्या आप में से कोई है जो परमेश्वर को कह रहे हैं कि मुझसे बात करो लेकिन आप शास्त्र उठा के नहीं पढ़ते? Anyways, after weeks and weeks of fasting, one night at 4 a.m. in the morning, and I 4 a.m. in the morning, you know how fast asleep you are, very fast asleep. I could suddenly hear divine music, and I was flat on my bed like this. I became like that, immediately became like that, upright. And the first thing that came out of my mouth was Philippians 4. और पहली चीज जो मेरे मुंह से निकली वो थी फिलिपियों 4. And like, see, someone who's never read the Bible, what is Philippians 4? What is Philippians 4? So something told me, like, pick up the Bible. It might be in the Bible. और मुझे लगा कि शायद ये शास्त्र से जुड़ा हुआ है तो मुझे शास्त्र खोल के देखना चाहिए. 4 in the morning, I turned on the light. I searched for the Bible in the house. तो मैं 4 बजे उठा, लाइट ऑन की और मैं शास्त्र ढूंढने लगा. And no clue, no Old Testament, New Testament, no idea what is in this book. So I started right from the very beginning. Genesis. और मुझे पता नहीं था कि पुराना वचन नया वचन क्या होता है, तो मैं मैंने शुरू किया उत्पत्ति से. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Proverbs, Psalms, Nehemiah. और नीति वचन, भजन संहिता, नेहमाया एक एक करके मैं देखने लगा. By the time I reached half of the book, I was tired. और आधी किताब जब मैं देख रहा था मैं थक चुका था. My mind was saying, just a dream. There's nothing like that in the Bible. But I kept turning the pages. Finally, I reached the New Testament: Matthew, Mark, Luke, John, Acts.
Then I finally reached the Ephesus, Paul's letters to the churches. Corinthians, Galatians, Ephesians. And right after Ephesians, I saw Philippians. और एफिसियों के बाद ही मुझे दिखा अचानक से फिलिपियों की And my किताब। heart skipped a beat, because I thought this was just a dream, and now I can see something in the Bible that's और- called. So I quickly started turning the pages until I found chapter 4. और फिर मैं पढ़ने फिर से पलटते गया और मैं रुका जब मुझे फिलिपियों का चौथा अध्याय दिखा। And when I read chapter 4, it brought so much peace and joy to my heart in that season of my life. Since that day I realized that everything that I'm searching for, all the answers I'm searching for is in this book. Since that day I have not put this book down. और उस दिन के बाद से मैंने कभी शास्त्र को छोड़ा नहीं। This year I'll be completing my reading of the entire Bible from cover to cover for the 14th time. I realized that when you pour into this book pours into you. And this book has been such a blessing in my life. When I picked up this book for the first time in 2008, I was still a bachelor. By the time I got to reading it the first time, I was married. और तब तक कि जब मैं पूरा शास्त्र पहली बार खत्म कर पाता मेरी शादी हो चुकी By थी। the time I got to reading the second time, I had a baby. और दूसरी बार जब शास्त्र खत्म होने से पहले मेरा पहला बच्चा हुआ। By the time I got reading the third time, I had my own car. और तीसरी बार खत्म करने से पहले मैंने अपनी पहली गाड़ी ली। By the time I got reading the fourth time, I had my own house. और चौथी बार पूरा शास्त्र खत्म करने से पहले मैं अपना पहला घर लिया। By the time I got reading the fifth time, I had my second baby. और पांचवी बार से पहले मेरा दूसरा बच्चा हुआ। By the time I got reading the sixth time, I had a bigger house. और छठी बार खत्म करने से पहले मैंने एक बड़ा घर खरीदा। By the time I got reading, like every year, another baby, another house, another car. और हर साल एक नया बच्चा, एक नया गाड़ी, एक नया घर, एक नई वृद्धि। Now what I'm trying to tell you now is don't try reading the Bible because you want something from the Lord. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप शास्त्र पढ़ें ताकि आपको नई नई चीजें मिले। The word of God itself is a reward. Amen. और प्रभु का जो वचन है, शास्त्र है, वही हमारा सबसे बड़ा इनाम है। It's only very later that I realized that Philippians chapter 4 is actually a very popular chapter among Christians, especially among believers. In fact, I can guarantee you that almost all of you know at least one scripture from Philippians 4 by heart. Like for example, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Philippians chapter 4. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind in Christ Jesus. Philippians 4. I'll give you one more. And my God will meet all your needs according to his riches in Christ Jesus. Philippians 4. And the best one, this one, I'm sure all of you will 100% know. I can do all things through Christ who strengthens me. I told you, I will definitely know Philippians chapter 4. I think, Ryan, we don't need to preach this message. They already know it. मुझे लगता है कि हमें वचन बांटने की जरूरत नहीं है, आपको पहले से ही पता है। Okay, so what we will do is, now I'm seeing some preaching through a chapter. We'll go one verse at a time. There are total 23 verses. Some we will go through very fast. Some we will go through little bit slow. And I'm looking at the clock. It's about 11:55 and half an hour, 45 minutes. But 12:30 latest we should be done. Okay, is it fine? Okay, Philippians chapter 4 verse 1. Therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown, stand firm in the Lord this way, dear friends. There are many commentators have noticed from the way Paul greets the Philippians church that they were very dear to him. They were not like a very big church, yet he visited them 3 times. The first time he met them in AD 49, then AD 56 and AD 57. This letter which we are reading right now was written in the year AD 61 or 62. That means all this is happening within 30 years of Jesus' crucifixion. Paul was martyred around AD 65. So just 3-4 years before Paul was martyred. In fact, this letter Paul wrote from the prison. And one of the reasons why I love this greeting, because it reminds me of all of us. All through the week we are dealing with people in the office, in our society, in our complex, people while traveling. And then finally when I come to church and I see all of you, और जब मैं कलीसिया आता हूँ रविवार को और अब सबसे मिलता हूँ, I say, "Hey, my people." मुझे लगता है ये मेरे लोग हैं, My church family. मेरा कलीसिया का परिवार। And there is so much joy when I see all of you. और बहुत आनंद मिलता है मुझे आप लोगों को देख। And then if one person doesn't come, I say, "Asujay नहीं आया यार." और अगर कोई आता नहीं है रविवार को मैं सोचता हूँ अरे ये आया नहीं The next है। day they go, "Asujay, last Sunday why you didn't come?" मैं सुजय से मिलता हूँ और कहता हूँ कि तुम पिछले रविवार क्यों नहीं आए। Anybody feels like that when you see your church family, you feel very happy in your heart. आपको लगता है रविवार को जब आप देखते हैं एक दूसरे को आपको आनंद मिलता है। Same sentiment, my brothers who I love and long for. By the way, in the first time I read this book, now Philippians, I thought Paul was writing to the people in the country of Philippines. Then I realized those are Filipinos. फिर मुझे पता चला कि उस देश के लोगों को फिलिपिनो कहते हैं। The Philippines that we are reading about are from the ancient Macedonian city of Philippi. Present day it is in Greece. और आज का जो वो क्षेत्र है वो ग्रीस या यूनान के नाम से जाना जाता है। Just wanted to clarify another thing. Paul wrote to the Filipinos, did he write to the Singaporeans, Indonesians, or what? Anyways, verse 2. और दूसरे वचन पे आते हैं।
I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. You know, the very next verse we come across a very common problem, not just in the world but also in the church. Two people struggling to get along. In this case, both of them are women. और इस उदाहरण में दोनों महिलाएं हैं And the Bible doesn't tell us what they were, who these women really were. It doesn't tell us what role they played in the church. It doesn't even tell us what they were quarreling about. Maybe they were part of the worship team. They couldn't decide which song to take. हो सकता है कि वो आराधना के समूह में थे और वो मान नहीं पा रहे थे कि किस गाने को गाना है Or they couldn't decide what time we should do the practice. हो सकता है कि प्रैक्टिस किस समय शुरू करना है इस बात पे वो सहमति नहीं बना पा रहे थे Or they couldn't decide where the life group should be, whose house the life group should be today. या हो सकता है किसके घर में लाइफ ग्रुप करना है वो सहमति नहीं बन पा रही थी The only thing we know is that they were having such a public dispute that even Paul, who was not even in the same city, heard about it. See, we all have someone in our lives now who brings out the worst in us. Someone who knows how to press all your buttons. जिसको पता है कि आपको कौन सी बात आपको बुरी लग सकती है That's why Jesus said now in Luke 17:1, "Verily I say unto you, offenses will come." You know what that word verily means? I guarantee you. I guarantee you, somebody or the other will do something to you. So that means the offense is not the main concern. The concern is what comes out of you when you are offended. For some of us it is anger, for some of us it is rage. कुछ लोग क्रोध में आ जाते हैं कुछ लोग बुरा भला कहने For लगते some हैं of us bad words, curses come out of us. कुछ लोग श्राप देने लगते हैं गालियां देने लगते हैं Some people just go incognito, means they disappear on you. They block you. और कुछ लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं आपके जीवन से जैसे गायब हो जाते हैं But whatever comes out of you when life steps on your toes will show you what's inside you. और जब आपको बुरा लगता है आपको चोट पहुंचती है तब आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो बताता है कि आपका चरित्र कैसा है When you squeeze an orange, you get an orange juice. When you squeeze pineapple, you get pineapple juice. When life squeezes you, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. और जैसा आपके हृदय में चीजें भरती होंगी वैसा ही आपके मुख से निकलेगा That's why I like this suggestion that Paul is giving them. He's giving them a very practical solution. It is so practical that I want to demonstrate to you how this works. और उसको जैसे हमारे जीवन में उसको लागू किया जा सकता है इसलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे My volunteers, Merlin and Divya, can you please? मंडिर और दिव्या हमारी सहायता करेंगे ये दर्शाने में Can you stand here and face each other? So one of them is Euodia and one of them is Syntyche. Okay? और उनमें से एक योडिया है और एक संतुकी है Now see, they are women of faith. They are in the church. They want to actually agree with each other. But when Euodia wants to agree with Syntyche, actually Euodia has a very different viewpoint. When she's seeing Syntyche, she's also looking at Sarita in the background. She's looking at Lakshmi. She's looking at the lights. She's saying this is a good day for party. You can go out today. और वो कहती है कि ये आज अच्छा दिन है पार्टी करने का चलो बाहर जाते हैं Now Syntyche wants to agree with Euodia, but she has a different viewpoint. When she's looking at Euodia, she's also looking at the window behind. She's seeing rain clouds is coming. The storm is going to come today. जब संतुके यहूदिया को देख रही है तो उसको बादल दिख रहे हैं बारिश दिख रही है She's saying, how can we go out today? Oh, are you out of your mind? और वो कहती है कि हम कैसे बाहर जा सकते हैं बाहर बारिश हो रही है Because they want to agree, but they have different viewpoints. वो दोनों सहमति बनाना चाहते हैं लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अलग है So what Paul is saying now, Euodia, I'm not asking you to agree with Syntyche's viewpoint. Syntyche, I'm not asking you to agree with Euodia's viewpoint. I'm saying agree with each other in the Lord. Let's have the Lord's viewpoint. Now can you turn and face the camera, both of you? Now you have the same viewpoint. क्योंकि जब आप प्रभु को देखते हैं तो आपका दृष्टिकोण एक ही होता है Can we give them a big round of applause? आइए इनको सामने Because see, when we turn to the Lord, all the other viewpoints fall apart and then we have the right view. That's why in the marriage course also, they say, like if you keep focusing on your spouse to meet all your needs, you'll always be disappointed. Because there are some desires God put in the heart, human heart, that only He can meet. And so when you put Jesus in the center of your marriage, इसीलिए अगर आप यीशु को अपने शादी के केंद्र में रखें and as a couple you try to serve Him, और एक दंपति के रूप में अगर आप प्रभु की ओर अपने दृष्टि को रखें then instead of being against each other, you can finally turn around and be next to each other. तो आप What Paul is doing is almost like a parent telling children, it's like every parent who has two children. It's like, come on, we are part of the same family. Shouldn't we just be getting along? Next verse. And I ask you, loyal yokefellow, help these women who have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. See, we don't know who this mysterious yokefellow is.
और हमें नहीं पता कि ये बंदा जो है ये कौन है, But see how Paul is addressing him, loyal friend, yoke fellow, means मेरा जिम्मेदारी मेरे साथ संभालने वाला. And see Clement and the rest of my fellow workers, all of these people whose names are in the book of life. Even Euodia and Syntyche, who cannot get along, also name is in the book of life. One person is called loyal yoke fellow, and against the name of these two women, it is recorded they could never get along with each other. 2000 years later, also we have seen that Euodia and Syntyche, they were always fighting. और 2000 साल बाद भी आज जब उनकी बात कर रहे हैं तो यही कह रहे हैं कि वो आपस में सहमति नहीं बना पाए. How would you like your name to be recorded for eternity? Fighter, योद्धा, Akudu, गुस्से वाला. Gabandi. और फिर See, frankly speaking, I don't know when we go to heaven now if we will have memories of our time here on earth. We remember we should meet in City Hope Church every Sunday. हो सकता है हम एक दूसरे से मिले और कहें कि याद है तुम्हें हम मिलते थे सिटी होप कलीसिया में हर रविवार. Remember Ryan and Lakshmi? याद है तुम्हें रायन और लक्ष्मी. Personally, I think we will remember everything. मुझे लगता है कि हमें सब याद रहेगा. You know, and if that's the case, then how would you like to be remembered? ये देख डेविड इसने गोलियत को मारा था. जैसे कि ये दाऊद है, इसने गोलायत को हराया था. ये देख जेकब इसने खुद का बाप और भाई को चूना लगाया. See, this is Jacob. He put See Jacob who betrayed his own brother and father. कलीसिया वाले जेकब नहीं, शास्त्र वाले जेकब की बात करते हैं. See, Euodia and Syntyche को देखो, always झगड़ा करता था. City of Judah always used to fight. You know, some of the things that we are upset and about and holding on to are so petty in the face of eternity. That's why Paul is telling Clement, don't just stand there and just watch these two women fighting. और उससे कहा कि सिर्फ खड़े मत रहो, इन दोनों महिलाओं को देखते मत रहो. Help them to get along. और उनकी सहायता करो कि वो आपस में सहमति Do बनाएं. something about this. कुछ करो इस बारे में. Remind them that their names are written in the book of life. उनको याद दिलाओ कि उनके नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखे हैं. Because see, the Bible says, blessed are the peacemakers. They will be called children of the Most High God. Verse 4. Rejoice in the Lord always. Again I say rejoice. प्रभु में सदा आनंद मनाते रहो. इसमें फिर दोहराता हूँ, आनंद मनाते You know रहो. why he's saying rejoice immediately after telling them to get along? Because it is very difficult for a happy person to be offended. You are a happy person saying, I'm so happy today, I feel like fighting with everybody. ऐसा कभी नहीं देखते कि आनंदित व्यक्ति कह रहा हो कि मुझे बहुत ही आनंद मिल रहा है आज, आओ किसी से जाके लड़ता हूँ. I'm so happy today, I feel like quitting my job. मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है आज, मैं आज अपनी नौकरी छोड़ देता हूँ. I'm so happy, I feel like screaming and shouting. मुझे बहुत आनंद है, मुझे गुस्से से चिल्लाना है आज. The devil cannot attack a joyful person with stress, anxiety, depression, frustration, because the joy of the Lord is our strength. क्योंकि प्रभु का जो आनंद है वही हमारा सामर्थ्य है. And joy is supposed to be the default mood of every believer. और मसीह होने के नाते हमारे अंदर वो आनंद अपने आप आना चाहिए. And say it again, joy is supposed to be your default mode. Verse 5, let your gentleness be evident to all, the Lord is near. See, 50 years from now, none of us, most of us may not be here. 50 years. 50 साल के बाद हो सकता है हम में से काफी लोग दुनिया में ना हो. That means with every passing day, the Lord is drawing near. Paul said to be absent in the body means to be present with the Lord. That means either Jesus will come to get us or we will go to meet him. And it's all going to happen within the next 50 years. और ये सब अगले 50 सालों में होगा. For some of us, maybe 30 years. और हम में से कुछ हो सकता है 30 सालों में. For some of us, maybe not next 20 years. हो सकता है अगले 20 सालों में हम में से कुछ लोग. Nobody knows how much time we have here on earth. किसी को नहीं पता कि हमारे जीवन में कितने समय Only बाकी the है. Lord knows. सिर्फ प्रभु को पता है. So that's why Paul is saying, let your gentleness be evident to all. Meaning be kind, courteous, tolerant with everybody. Why? Because the Lord is drawing near with every passing day. Verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer, petition, and thanksgiving, present your request to God. So this is one of my favorite verses in the Bible. और ये बहुत ही पसंदीदा वचन है मेरा शास्त्र में. Think about this way, if your child comes to you today, जैसे सोचिए कि अगर आपका बच्चा अगर आपके पास आता है he says, Dada, Mama, I can't sleep only at night. और कहता है माता पिता मैं रात को नहीं सो सकता, मुझे नींद नहीं आती. Why you can't sleep? और आप पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं सो पाते. Now I was thinking that we have to pay the EMI and electricity bill also has to be paid. And how we'll pay the rent and how we'll pay the car loan. I was thinking about all that and I was not getting sleep only. Now what, as a parent, what you tell your child? माता पिता होने के नाते आप क्या कहेंगे बच्चे से? Listen, I know all these bills and all are there, but that is none of your concern. और आप कहेंगे कि मुझे पता है बहुत खर्चे हैं लेकिन इसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है. I'll take care of the bill, I'll take care of the rent.
You focus on what you are supposed to do. मैं ध्यान रखूंगा इन खर्चों का, तुम वो करो जिसे तुम्हें करना चाहिए। Same thing God also is telling us, be anxious for nothing. और परमेश्वर भी हमें यही कह रहा है कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। Don't worry about what you'll eat, what you'll wear, where you will stay. और इन बातों की चिंता मत करो कि तुम क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे। In fact, Jesus says, "Not take no thought for these things. Don't even think about it." और यीशु कहता है कि इन बातों के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। And see, then when he says, "No, but in everything by prayer, petition, and thanksgiving, present your request to God." You know, many people say, "God already knows my needs, and why I have to pray." लोग कहते हैं कि प्रभु को मेरे जरूरतों के बारे में पहले से ही पता है, तो मैं प्रार्थना क्यों करूं? Does God know your needs? क्या प्रभु को आपकी जरूरतों के बारे में पता है? Then why you have to pray? तो क्यों प्रार्थना करनी I'll चाहिए? give you 3 reasons. मैं आपको 3 कारण दूंगा। Firstly, it allows us to model the behavior that Jesus set for us. One of the things that Jesus did most when he was on earth was he prayed. Secondly, God loves it when we pray and communicate with Him. Third reason is God knows what your needs are, but He's also relevant to your wants. प्रार्थना के द्वारा Praying allows you to go beyond your needs and also express your wants to your Father. Verse 7, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. See, understandably, now there are 2 kinds of peace. The peace of man and the peace of God. There are many people who like sometimes when I speak, say there's no peace in my house. All the time we are fighting. There's something wrong with this house. Next time you feel like that, I'll give you one suggestion. और अगर आपको अगली बार ऐसा लगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा। All your family now you'll leave the house, lock the door. और ऐसा अगर हो तो सबको बाहर निकालिए और घर में ताला लगा And दीजिए। then try to peep into your house through the window. और उसके बाद आप खिड़की से झांकने की कोशिश करें। Most of you cannot because you are living in high-rise buildings. क्योंकि हम में से काफी लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, तो ऐसा शायद कर ना पाए। But if you could peep through the window, you will see that your house is very calm without you. लेकिन आप अगर फिर खिड़की से झांक पाए तो आपको समझ में आएगा कि बिना लोगों के घर बहुत ही शांत दिखेगा। In my house now I have a CCTV camera because sometimes I want to watch the boys. और मैंने अपने घर पे कैमरा लगा के रखा है क्योंकि मुझे अपने बच्चों को देखना होता है। Sometimes when I go to Talasari, you know, और जब हम थलासरी जाते हैं on my phone I turn the camera on to see what's happening in my house. और मैं फोन में चालू करता हूँ कैमरा देखने के लिए कि मेरे घर में क्या हो रहा है। And I see the house is so calm, like और मुझे दिखता है घर में बहुत शांति है। all the curtains are like still, nothing is moving. सारे पर्दे स्थिर हैं, कुछ भी हिल नहीं रहा। In Africa, some of the women do it. When there is a lot of fight in the house, they take a broom in their hand. अफ्रीका में कुछ घरों में महिला ऐसा करती हैं, जब झगड़ा होता है तो हाथ में झाड़ू लेती हैं And they start sweeping the house. और वो झाड़ू लगाना शुरू कर देती And they हैं। say everything that is not of the Lord, every demon, get out of my house in Jesus' name. और वो बोलती रहती है कि जो भी प्रभु की ओर से नहीं है वो घर से तुरंत निकल जाए। And sometimes after that, there is peace. और उसके बाद जैसे शांति महसूस होती But है, sometimes there is still no peace. उसके बाद भी शायद शांति ना मिले। So then they try the husband out. उसके बाद महिलाएं अपने पति को बाहर निकाल देती हैं, After some time, they try the children out. उसके बाद अपने बच्चों को निकाल देती है, And still no peace. उसके बाद भी शायद शांति नहीं मिलती Because you drove everybody out except yourself. क्योंकि उस महिला ने सबको निकाल दिया लेकिन खुद को नहीं निकाला। Don't say there is no peace in your house. Say there is no peace in me. ऐसा ना कहे कि घर में शांति नहीं है, कहे कि आपके हृदय में शांति नहीं है। There are 2 kinds of peace, the peace of man and the peace of God. और 2 तरह की शांतियां हैं जो विश्व में आपको मिलता है, एक दूसरे से, और एक जो परमेश्वर से आपको मिलता है। The peace of man is a superfluous kind of peace. और विश्व में जो आपको शांति मिलती है एक दूसरे से, वो ज्यादा देर शायद ना टिके, It's tied to all the externals. और वो काफी दूसरी जो विश्व की चीजें हैं उससे जुड़े होती हैं। It's tied to your air conditioner working properly. आपके घर में एसी बराबर से काम कर रहा है कि नहीं, It's tied to your wife making good tasty food for you. आपकी पत्नी आपके लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बना रही है कि नहीं, It's tied to your salary. It's tied to your bank account. आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी है कि नहीं। You know, but there is a peace of God which transcends all understanding. लेकिन यीशु से जो शांति आती है वो आपके समझ के परे होती है, Because it is not tied to any external factors. और वो यीशु की जो शांति है वो इन सब चीजों से जुड़ी नहीं It's होती, not tied to your job. It's not tied to your economy. या आपकी नौकरी से जुड़ी नहीं होती, या आपकी वित्तीय स्थिति से जुड़ी That नहीं is why it होती। surpasses all understanding. इसीलिए ये सारे समझ के परे होती You है। know, this is the peace that Jesus was talking about in John 14:27. He said, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you." Because you cannot have the peace of God unless you have peace with God. क्योंकि आपको प्रभु से तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप और प्रभु के बीच में वो शांति की स्थिति ना हो। I'll say that again. You cannot have the peace of God unless you have peace with God. Okay, to move faster, I'll just club some verses together. 8 verses 8 and 9. Finally, brothers,
whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about these things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Both these verses deal with our thought life. और ये दोनों वचन जो है हमारे दिमाग में जो चलता है उसके बारे में है। They say a typical human emotion lasts for 90 seconds. और ऐसा कहते हैं शोधकर्ता कि आपके दिमाग में अगर कोई भावना चल रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा 90 सेकंड के आसपास रहती है। Meaning you're driving and someone cuts you off and you start feeling frustrated. और हो सकता है गाड़ी चला रहे हो, कोई आपके आगे से निकल जाए तो आपको गुस्सा आ रहा है। Or you're walking on the road and a dog starts barking at you and you start feeling fear. आप सड़क पे चल रहे हैं, आप पे कुत्ता भौंकने लगता है और आपको जैसे डर लगता है कुछ समय के लिए। Whatever that emotion is, that emotion lasts for 90 seconds max. और जो भी भावना आपको उस समय महसूस होती है, ऐसा पाया गया है कि वो 90 सेकंड के आसपास ही रहती What है। happens after that is determined by what happens over here. और उसके बाद क्या होता है वो इस पे निर्भर करता है कि आपके दिमाग में क्या चलता Are है। you going to go into rage mode and start yelling and screaming? क्या आप इतने गुस्से में आ जाते हैं उसके बाद कि आप चिल्लाने लगेंगे? Or are you going to take a deep breath and put some nice soft music and continue your drive? या फिर उसके बाद आप एक लंबी सांस लेंगे, कुछ अच्छा संगीत लगाएंगे और आगे अपने सफर में चलते What जाएंगे। Paul is saying, since you are deciding what to think about these things. पौलुस कहते हैं क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि आगे क्या करना है, इन बातों के बारे में सोचो। Whatever is noble, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is everything, think about these things. जो भी पवित्र है, जो भी आनंददायी है, इन बातों के बारे में सोचो। See, once you receive the gift of peace from God, now it is our responsibility to preserve it. One friend of mine, a colleague in my office, और ऑफिस में मेरे साथ एक काम करने वाले व्यक्ति हैं every day she comes and says, "No, I couldn't sleep at night. No, I'm not getting proper sleep." और वो रोज मुझे आके कहती थी कि मुझे रात को नींद नहीं आती ठीक से। Then she's saying, "No, but every night I like to watch horror films." लेकिन ये भी कहा कि हर रात मुझे जो भूतिया कहानियां हैं ये देखना पसंद है। So obviously, then you're not getting good sleep, you know. तो अगर आप ऐसे मूवीज देखेंगे भूत वाले तो आपको नींद कैसे So we आएगी? suggested, why don't you stop watching these horror films? तो मैंने उनके कहा कि ऐसे पिक्चर मूवीज देखना बंद करो जिसमें भूत वगैरह हैं। But I really like horror films. लेकिन उन्होंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे पिक्चर See, देखने for में। people who are not saved, there's a root of sin that draws them towards these things. और जो लोग मसीह में नहीं है उनके हृदय में जैसे वो जड़ है जिसकी वजह से उनको ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं। And then they say, "I don't have peace. I don't have peace." फिर वो कहेंगे कि मेरे जीवन में शांति नहीं है। If you are one of them, no, don't watch violent films, don't watch horror films, and you will have a lot of peace. अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप ऐसे मूवीज ना देखें जिनमें बहुत ही मारधाड़ हो रही हो या फिर भूत है, ऐसे पिक्चर आप ना देखें तो आपको शांति महसूस होगी। Verses 10 and 12. I rejoice greatly in the Lord that at last you renewed your concern for me. Indeed, you have been concerned, but you had no opportunity to show it. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. And if you know the story of Paul, no, what he's referring to here right now is his range of experiences in the ministry. 5 times he was flogged, 5 बार उनको कोड़े मारे गए, he was stoned, उन पे पत्थर चलाए गए, 3 times his shipwrecked. Yet he claimed not to have found the secret of being happy in every situation. The minute he said, "I found the secret," now all the Bible scholars started searching for this secret in his letters. Right. Finally, they found it in the book of Philippians only. और उन्हें ये रहस्य फिलिपियों की किताब में ही मिला। Philippians 3, 7 and 8. See, this is a secret. Okay? और ये वो रहस्य है। Whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus as my Lord. For His sake, I have suffered loss of all things, and I count them as rubbish, in order that I may gain Christ. And if I want to simplify this for you, when you start experiencing Christ as more valuable than anything else in the world, you will have found the secret to be content in every situation. Verse 13, everybody's favorite verse from the Bible. I can do all things through Him who gives me strength. Okay. Many people misunderstand and misconstrue this verse to be a license to do whatever you want. और कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे ये वचन कह रहा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। I am going to buy this very expensive house, very expensive car, very expensive necklace, even though I cannot afford it, because I can do
all things to Christ who strengthens me. Then when you are burdened with heavy debt and you cannot pay the loan, you say, Christ will strengthen me. उसके बाद जब आप पे उधार बढ़ जाता है, जब आप पैसे चुका नहीं पाते, तब आप कहते हैं कि यीशु ने मुझे सामर्थ दिया I thought I can do all things, but Christ not strengthening me only. आप सोचेंगे कि यीशु वचन में तो कह रहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मुझे सामर्थ दे नहीं रहा। You have to see this verse in its proper context. और आपको इसके सही संदर्भ में इस वचन को देखना है। Because if you take the text out of context, then all you will be left with is a corner. और अक्सर Don't interpret. What he's saying now is he's saying, because I've learned the secret to be content in every situation, that is why I can do all things through Christ who strengthens me. Not he's saying I can buy a house, I can run the Olympics. और सही संदर्भ में ये वचन को आप देखें तो प्रभु से जो सामर्थ आता है उसके द्वारा आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके महंगा घर या महंगी गाड़ी खरीद लें जो आप नहीं इसके पैसे चुका सकते। See, no matter how much faith you have, no, if you take this verse and you go to the Olympics and say, "No, I can do all things through Christ, and I'm going to run in this 100-meter race." और Will come last. जितना भी विश्वास हो, अगर आप ये वचन लेके ओलंपिक्स में जाएं 100 मीटर की दौड़ भागने के लिए, तो आप हमेशा हार ही जाएंगे, क्योंकि ये उस संदर्भ में नहीं है। Verse 14 to 17. Yet it was good of you to share in my troubles. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. And actually, the Philippi church now was not a very big or a wealthy church. और फिलिप्पी की जो कलीसिया थी वो बहुत बड़ी या बहुत ही अमीर कलीसिया नहीं थी। Actually, they were people just like us. हमारे जैसे ही वो लोग थे। They had to pay their bills, they had to take care of the children, they had to take care of the food expenses. उनको भी खाने पीने का सामान घर में डालना होता था, उनको भी अपने बच्चों का ख्याल रखना पड़ता था। But when they gave, they didn't give out of their abundance, they gave out of their lack. जब वो उन्हें दिया तो इसलिए नहीं दिया कि उनके पास बहुत अधिक धन था, लेकिन उनके पास जितना भी था उसमें से निकाल के उसने दिया। That's why Paul commended them. He said, "I'm not looking for your gift." इसीलिए पौलुस ने उनकी प्रशंसा की और कहा कि मैं उपहारों का इच्छुक नहीं हूँ, I'm looking for what may be credited in your account. लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे को कितना लाभ हो सकता है। Do you know you have an account with God? क्या आपको पता है कि आपका एक खाता है प्रभु के साथ? Like now, everything that you do on earth is being recorded and tracked. जो भी आप विश्व में करते हैं उस खाते में वो जुड़ता जाता है। Why is it being recorded and tracked? आपको क्या लगता है उस खाते में वो लेखा जोखा प्रभु क्यों रखता है? So that one day you will be duly compensated for everything that you did for God's kingdom. और ताकि आपको एक दिन प्रभु के राज्य के लिए आपने जो भी किया है उस खाते में जुड़े और आप उसका आपको लाभ मिले। Even your motives, when you're giving, what was the motive, what you had to sacrifice to give, everything is recorded. और जब आप दे रहे थे, आप किस इच्छा से दे रहे थे, आपने क्या बलिदान करके दिया प्रभु के राज्य में, ये सब भी देखा जाता है। And your real treasure is actually being stored up in heaven right now. और Where no moth, no thief, no rust can destroy. और आपका जो असली धन है, आपकी जो असली संपत्ति है, वो प्रभु के राज्य में इस समय जोड़ी जा रही है, जिस पे कोई भी दीमक या फिर कोई भी कीड़ा उसे आके बर्बाद नहीं कर सकता। 3 or 4 generations after this, Paul wrote this letter to them that Philippi, the city of Philippi, where these people were living, became the most prosperous city in Macedonia. और पौलुस के ये पत्र लिखने के 3-4 पीढ़ी के बाद ऐसा देखा गया कि ये जो शहर था, फिलिपी के जो लोग थे, वो काफी धनवान हो गए उस समय। So rich that they built 7 churches in their city. और इतने धनवान हो गए कि अपने शहर में उन्होंने 7 कलीसियाओं का निर्माण किया। And not small churches, huge churches. और छोटी कलीसिया नहीं, बहुत ही बड़े 7 कलीसियाओं का निर्माण If किया। you go to Wikipedia, Google, you see the ruins of the churches. Now the historians have recorded that this Philippian city built churches better than Thessalonica and even Constantinople. और अगर आप गूगल में देखें जो इन कलीसियाओं की आप चित्र देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कॉन्स्टेंटिनोपल और थेलोसोनिका से भी बड़े और अच्छे कलीसिया इन लोगों ने बनाए थे। Constantinople means that time का न्यूयॉर्क, Thessalonica means that time का लंदन। और ये जो शहर है कॉन्स्टेंटिनोपल और थेलोसोनिका उस टाइम के लंदन और न्यूयॉर्क के समान जो आज देखे जाते हैं वैसे शहर हुआ करते थे। These people prospered so much that they will be compared with the most richest cities in the world. और इनको इतनी वृद्धि मिली कि ये सबसे जो अमीर शहर हैं विश्व के उस समय के उनमें इनका नाम आता था। And when they asked these people, how did you prosper so much? और जब आप इनसे पूछते थे कि तुमको इतनी वृद्धि कहाँ से मिली, They ascribed it to Paul's blessings.
और उन्होंने कहा कि पौलुस से जो आशीष हमें मिला था उसकी वजह से ये आया। Even today, when you go to the ruins of the churches, you will see Paul's name written in the mosaics. और आज भी अगर आप इन कलीसियाओं को जाके देखें, जो उनके जो अंश बचे हैं उनमें आपको पौलुस का नाम दिखेगा। And what I want to tell you now is, if you sow, you will definitely reap. और मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा बोएंगे तो आप अच्छा जरूर काटेंगे, Because what goes around comes around. क्योंकि जो होता है वो वापस से घूम के फिर से होता है। Even if you don't come from a prosperous family, make sure a prosperous family comes from you. अगर आप एक अच्छे परिवार से, वृद्धि वाले परिवार से नहीं आते हैं तो ऐसे कार्य करें कि आपके द्वारा एक अच्छा परिवार बने। You can change your destiny and your children's destiny by how you handle what God has given you. आप अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं, पर परमेश्वर ने आपको जो सामर्थ दिया है उसके द्वारा। See, money is a physical thing. Prosperity is a spiritual thing. और पैसा जो है वो आप छू सकते हैं, वो एक विश्व की चीज है, लेकिन जो वृद्धि है, जो आशीष है, वो प्रभु से आती है। If you want to be prosperous, now first you must be prosperous in your spirit. अगर आप अपने जीवन में आप आशीष पाना चाहते हैं, आप वृद्धि पाना चाहते हैं, तो आपके आत्मा में, आपके हृदय में आपको पहले वो आशीष लेना पड़ेगा। And then it will manifest in the physical realm also. और वो फिर आपकी दुनिया में, आपके जीवन में आपको दिखेगा। How to be prosperous in the spirit? फिर आप पूछेंगे कि मेरी आत्मा में मैं कैसे वृद्धि लाऊं? Start acting like a prosperous person. तो आप ऐसे व्यक्ति बने जिसके पास वृद्धि है। See, now this opportunity Ryan has given now for the global offering. और ये जो ग्लोबल ऑफरिंग की बात जो रायन कर रहे हैं, The same call now Paul gave the Philippian church. और यही मौका जो है पौलुस ने फिलिपियों को भी दिया था। He said, "I am taking an offering not for you, but other churches." और उसने कहा था कि मैं ये जो ले रहा हूँ ये तुम्हारे लिए नहीं, ये दूसरी कलीसियाओं के लिए ले रहा हूँ। You see how they responded to that call. और आपने देखा कि किस तरह से प्रतिक्रिया दी उन्होंने। Now the same call is upon us. और यही मौका अब हमें मिला है, We have to determine how we are going to respond. और हमें निर्णय लेना है कि हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी The है। day Ryan made that call in the night, I slept. In the morning, I got up and I told Sharon, "I have decided I am going to give this much money." और जैसे ही रायन ने उस दिन उस बात को किया देने के क्षेत्र में दूसरी कलीसियाओं के लिए, रात को मैंने सोचा और सुबह मैंने शरण से बात की और कहा कि मैंने सोच लिया है कि मुझे कितनी राशि देनी है। And she said, "You should try and give little more." और शरण ने कहा कि तुम्हें कोशिश करनी चाहिए कि तुम और एक बड़ी राशि दो। Because she is very generous and prosperous in the spirit. शरण अंदर से आत्मिक रूप से काफी आशीषित है और काफी वृद्धि। You know how on the day we got married, our parents gave her, because they come from Kerala, no? So a lot of gold and necklace, and all they gave her for a marriage. जब हमारी शादी हुई थी तो जैसे शरण केरला से आती है तो शादी के समय उन्होंने काफी सोने की चीजें दी थी। The next day, when we went to the next week when we went to church, there was a call for an offering. और अगले सप्ताह जब हम कलीसिया गए तो देने के लिए कहा गया प्रभु के राज्य के लिए। And she doesn't work, so she doesn't have any income. और शेरिल अभी कुछ कार्य नहीं कर रही हैं ऑफिस के क्षेत्र में, इसलिए उनकी कोई आमदनी नहीं है। So she said, "Kevin, I'm going to give all this." और उन्होंने कहा कि मैं अपने जो सोने की चीजें हैं, आभूषण है, वो मैं प्रभु के राज्य के लिए देना So चाहती Cheryl, हूँ। this is your parents' gift to you. और मैंने कहा कि शेरिल ये आपके माता पिता ने आपको दिया है। She said, "If it is a gift to me, then can I not decide what I want to do with it?" और उन्होंने कहा कि अगर ये उपहार मुझे दिया गया है तो क्या मुझे हक नहीं है कि मैं निर्णय लूं कि इसके साथ क्या करना She है। gave it all. उन्होंने वो पूरे जो सोने के आभूषण थे वो प्रभु के राज्य के लिए दे दिया। Till now she's prosperous, not without working. और आज भी उनको वृद्धि है, आज भी वो कार्य नहीं कर रही है, लेकिन आज भी वो वृद्धि है उनके जीवन See, में। what I want to say now, sometimes we sow and we only reap. और मैं कहना चाहता हूँ कि हम ही अच्छा बोते हैं और हम ही अच्छा काटते हैं। Sometimes we sow and our children reap. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा बोते हैं और हमारे बच्चे काटते हैं। Sometimes you have not sowed, but you are still reaping. और कभी ऐसा भी होता है कि आपने बोया भी नहीं है लेकिन फिर भी आप काटते हैं, Because your previous generation sowed for you. क्योंकि आपकी जो पिछली पीढ़ियां थी उन्होंने आपके लिए बोया था। But if you sow, you will definitely reap. लेकिन अगर आप बोएंगे तो आप जरूर काटेंगे, Because what goes around. क्योंकि जो होता है वो वापस आपके जीवन में आता Okay, है। last few verses, 18 and 19, I have received full payment and even more. I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gifts you sent. They are a fragrant offering and acceptable sacrifice, pleasing to God. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. You can see this verse now came to pass in the life of the Philippian church in the Philippines. और ये वचन फिलिपियों के लिए सही साबित हुआ। Why they became so prosperous? क्यों वो इतनी वृद्धि उनको मिली? Because he didn't say, "My God will meet all your riches according to meet all your needs according to His riches in Macedonia." और ये नहीं कहा गया था कि तुम्हारी जो भी आवश्यकताएं हैं वो यीशु तुम्हें देगा मसिडोनिया के कलीसिया के बराबर। Or I will meet all your needs according to the riches in Greece.
और प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरा करूंगा यूनान की जो कलीसियां हैं उनके द्वारा। He will meet all your needs according to His riches of glory in Christ Jesus. उसने ऐसा कहा कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं को मसीह यीशु में प्राप्त अपने भव्य धन से पूरा करेगा। Now, how rich is Christ Jesus? और क्या आपको पता है कि मसीह कितना धनवान है? Okay. Last 3 verses, verses 20 to 23. To our God and Father be glory forever and ever. Amen. Greet all the saints in Christ Jesus. The brothers who are with me send greetings. All the saints send you greetings, especially those who belong to Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. You've seen how Paul started the letter. He started with Jesus. He ended with Jesus. पौलुस ने इस पत्र की शुरुआत यीशु से की और अंत भी यीशु से की। Everything in our life must start and end with Jesus. हमारे जीवन में भी चीजों की शुरुआत यीशु से होनी चाहिए और अंत यीशु से होना And चाहिए। Jesus must be in the middle also. और यीशु बीच में भी, केंद्र में भी होना चाहिए। You know, if I want to do the same thing in this message, और इस वचन में भी मैं यही करना चाहता था। because if I don't bring Jesus to the center of this message, then this is just a motivation speech. और क्योंकि मैं अगर यीशु को इस वचन के केंद्र में ना लाऊं तो ये सिर्फ एक अच्छी बातें करने के समान होगा। But I have a word from the Lord for you, मेरे पास एक शब्द है प्रभु के द्वारा for the entire church. पूरी कलीसिया के लिए। See, today is August 11. आज 11 अगस्त है On August 1, I had a dream again at 4 a.m. in the morning. और 1 अगस्त को रात को 4 बजे मुझे एक सपना आया था। I saw myself in the dungeon with Jesus. मैंने अपने आप को देखा एक गुफा में यीशु के साथ। And I was not sure where that dungeon is now, whether it was in Caiaphas' house or Pilate's house, because I had seen Jesus was already beaten up. और मैंने देखा कि यीशु को बहुत ही चोट लगी हुई थी, उन्हें बहुत मारा गया था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो गुफा कहाँ पे है। Because on the night when he was arrested, now they took him to Caiaphas' house, they held a mock trial, they beat him. और जब यीशु को गिरफ्तार किया गया था उस रात को काइफस के घर पे उन्हें ले जाया गया था, उन्हें मारा गया था। And they condemned him to death and they were supposed to take him to Pilate's house, but it was still night. और उनको दोषी ठहराया गया और पोंशियस पायलट के घर पे उन्हें ले जाने वाले थे, लेकिन रात बहुत थी So they kept him in a dungeon. तो उन्हें गुफा में रखा गया था रात को। When I was in Jerusalem, I actually went to the dungeon. और मैं जब यरूशलेम गया था तो मैंने उस गुफा में गया मैं। And although I in the dungeon, there was one more person there, me and Jesus, 3 of us. और मैंने सपने में देखा कि उस गुफा में 3 लोग हैं, मैं थे, यीशु थे और एक व्यक्ति था। And I saw Jesus not angry, not bitter. और मैंने देखा कि यीशु में कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था, ये कड़वाहट He नहीं was दिख just रही looking थी। at all his wounds and he was very grieved in his spirit. और वो सिर्फ अपने जो घाव हैं शरीर में उनको देख रहे थे और ऐसा लग रहा था उनके मन में काफी उदासीनता है। And in my dream, like I wanted to say something to him, और सपने में मैं चाहता था कि मैं उनसे कुछ कहूँ, but I didn't know what to say. लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कहूँ। Don't worry, Jesus, everything will be all right. In the morning, I was going to get more worse. और क्योंकि सुबह को वो घाव और खराब होने वाले थे। Don't worry, Jesus, I am here now. क्या बोलूं? I can't even say that. Can any of us take his place? क्या हम में से कोई भी उनकी जगह ले सकते हैं? Even if you could take his place, would there be any merit in a sacrifice? और अगर हमने ले भी लिया तो हमारे बलिदान का क्या ही मूल्य है? Only Jesus could do what Jesus did. सिर्फ यीशु ही कर सकता था जो उन्होंने किया, Only his price, only his blood could pay the price. क्योंकि उसी के लहू में वो मूल्य था जो बलिदान योग था। So I just sat there grieving with him. और सिर्फ मैं उनके साथ बैठा रहा सपने में। In the morning when I got up, I asked Lord, what are you trying to say to me? और जब मैं सुबह उठा तो मैंने पूछा परमेश्वर से कि आप मुझसे क्या कहना And he चाहते said हैं? to me, tell my people not to take their blessings for granted. और उन्होंने कहा कि मेरे लोगों से कहो कि उन्हें जो आशीष दिया गया है उसके मूल्य को समझें, Because there is a big price that has been paid for them. क्योंकि बहुत बड़ा मूल्य उन आशीषों के लिए दिया गया है। You know, and for some people, I have to tell them what their real blessing is. और कुछ लोगों को बताना जरूरी है कि उनकी सच्ची आशीष क्या है। Your blessing is not the iPhone, the car, the house. आपकी जो आशीष है जीवन में वो आपका महंगा फोन या गाड़ी या फिर आपका घर नहीं है। The blessing is your very life, और आपका जीवन जो है वही आपका सबसे मूल्यवान आशीष your है। family, your loved ones. आपका जो परिवार है, आपसे चाहने वाले लोग हैं, वो आपकी आशीष है। And if you look around now, the world is preparing for war. और अगर आप दुनिया में देखें तो विश्व तैयारी कर रहे हैं युद्ध की। If you see all over the place now, innocent people are caught up in unnecessary conflict. और मासूम लोग जो है फंसे हुए हैं इस हिंसा में। They've lost their house, they've lost their livelihood. उनके घर, उनकी नौकरियां चली गई हैं। No food, no water, और खाने पीने का सामान नहीं है, पानी नहीं है पीने का, no internet, no electricity. इंटरनेट या फिर बिजली भी नहीं है। If you ask any of those people, what do you really want today? अगर आप इन लोगों से पूछे कि आज तुम्हें किस चीज की जरूरत है, They'll say, I just want to go back to one day of peace.
वो कहेंगे कि मुझे एक दिन वापस उस शांति के दिन में ले I just जाओ। want to go home and have one cup of tea and go to bed. मैं एक दिन घर पे जाके चाय पी के सो जाना Without worrying about whether I'll be alive tomorrow or not. इस चिंता से दूर जाना चाहता हूँ कि कल मैं जिंदा रहूंगा या And नहीं। all those people will happily trade places with you in a minute. और वो लोग हैं जो खुशी से आपका जीवन बदल लेंगे, आपके जीवन को चाहेंगे। And I sense a lot telling me now, caution my people that this what is happening there can also happen over here. और ऐसा लगा कि प्रभु मुझे चेतावनी देने के लिए कह रहा है कि जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ भी हो सकता है। Suddenly you will be without electricity, there will be war, there will be like lack of food, you will see your own people starving. अचानक युद्ध हो सकता है, अचानक हमारे मेजों में से खाना गायब हो सकता है, हमें पानी नहीं मिलेगा, बिजली गायब हो जाएगी। All the time threat of like anytime bullet can come, anytime bomb may fall. और हमेशा ये डर लगा रहेगा, कहीं से गोली चल जाएगी, कहीं से बम गिर जाएगा। And if that time anybody asks you, what do you really wish for? और तब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप सच में क्या चाहते हैं, You say, I wish for one day like this, और आप कहेंगे कि एक दिन मुझे ऐसा आज शांति भरा where I चाहिए can come to church. कि मैं कलीसिया आराम से जा After सकूं, church, I can go home. कलीसिया के बाद मैं घर I जाऊं can do anything I want. I can watch Netflix. और नेटफ्लिक्स देखूं, I can go shopping. मैं चीजें खरीदने I जाऊं can eat any dish that I want. और मैं कुछ भी खा सकूं, And all my family members are right around me. और मैं परिवार वालों को आपस में बुला सकूं। That means today is really a blessed day in your life. इसका मतलब ये है कि आज जो आपका जीवन है वो सच में बहुत आशीषित है। So don't spend time complaining and worrying about unnecessary things. इसीलिए आप कुड़कुड़ाएं ना और छोटी मोटी चीजों के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो। The Lord wanted me to tell you not to take your blessings for granted. और प्रभु मुझे ये कहना चाहता था कि आपकी कलीसिया के लिए कि हमें जो भी आशीष मिला है उसके मूल्य को हम छोटा ना समझें। This is the day that the Lord has made. Rejoice and be glad in it. ये दिन प्रभु ने बनाया है, इसमें आनंदित रहो। And the grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. और तुम में से हर एक पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। Let us just stand. So, Father, we just want to thank you for your word. Thank you for encouraging us. And we ask you, Holy Spirit, that we would live, Lord, in these days being full of joy, Lord, being full of the Spirit, Lord, being contented, Lord, with all that you have given us and blessed us with, Lord Jesus. Lord, we thank you for the cross. We thank you for the price that you paid. Lord, I pray that, Lord, we would, Lord, carry your heart and the message of love to many others who are hurting, Lord, around us, and that, Lord, we will share the same joy that we experience in the midst of everything around us. The joy that we experience, we'll be able to share that joy with many others, Lord God. And so give us the grace, enable us, Lord, as we move along, Lord Jesus, and Lord, and step out in obedience to all that you have called us to. We ask you, Holy Spirit, that you would be with us, you would lead us, and you will guide us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Have a great week ahead.